अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले सेशन में हमने डेव टेक्सोनॉमी की जो सब डोमेन्स है इस पर बात की थी। इस सेशन में हम इन सब डोमेन्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसकी जो एक्शन वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं, जो की वर्ब्स है, जो की वर्ड्स है, उसके लिए हम उसकी एग्जांपल देंगे कि क्या क्या वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर डेव टेक्सोनॉमी में कुछ ऑब्जेक्टिव्स यानी हर एक लेवल की हम आगे स्लाइड्स में दे देंगे। एंड आफ्टर दैट हम जाएंगे टुवर्ड्स द इफेक्टिव डोमेन। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, on the basis of the different subdomains from the cognitive domain, from the psychomotor domain, from the affective domain. The psychomotor domain हम डिस्कस कर रहे थे, which actually involve some physical activity, which is being the learning of some political skill। और उसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उस स्टेजेस के जो है हम डिफरेंट सब डोमेन कहते हैं। एंड दीज स्टेजेस दे हैव बीन डिस्कस इन अ डिफरेंट वे, like we have discussed in the previous session in the Simpson taxonomy. This is the next one, the Dare taxonomy. There is another one which is the Harrow's taxonomy. All they have described the learning skill in different steps, and all these are the stepwise, and we have to go forward from one step to the next step until we have to be master in that step. It means it is all about the mastery। हम जब तक एक सब डोमेन में मास्टरी नहीं हो जाती तो हम आगे जो है नहीं जा सकते। तो पहला जो सब डोमेन है अब द डेव टेक्सोनॉमी, दिस इज द इमिटेशन। एंड सिंपल इमिटेशन जो है दैट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू लर्न एंड पैटर्न योर बिहेवियर आफ्टर समवन एल्स। It means you have to follow someone, you have to copy someone। आपने किसी को मॉडल बनाना है, this is actually the imitation। The learner observe a skill and attempt to repeat it। अब इसमें ऑपरेटर शुरू होती है, लेकिन चूंकि ये कॉपी पेस्ट होता है, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली व्हाट द टीचर हैव परफॉर्म, व्हाट द टीचर हैव डेमोन्स्ट्रेट टू देम। लेकिन उसमें ये होगा कि आप उनको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर एक एक को पहले वो समझेगा और सही उसको ऐड करने की कोशिश करेगा। So the learner in this imitation, they absorb a skill, and after the observation, after watching the skill, he or she will attempt to repeat it, or sees a finished product and attempt to replicate it while attending to an exam. At this level, the performance may be of low quality. There will be a lot of mistakes. There will be a lot of errors. They should be encouraged along with their errors. They shouldn't be discouraged. They should be motivated. They should be appreciated for their correct ones. And their errors, they should be corrected. A response and the feedback from the teacher, from the demonstrator, that is very necessary. They have very important role in the learning in that stage. If they have been discouraged, just if they have been punished, and they have been just been treated in a very ill manner just for their mistakes, so again it will uh, affect the upcoming subdomains as well, and their learning will be of low quality. At this level, they should be encouraged, they should be appreciated, they should be motivated for their mistakes। I mean, it happens। ये अपनी गलतियों से हम अपनी गलतियों ही से सीखते हैं, और उन गलतियों के लिए उनकी करेक्शन होनी चाहिए और उनको जो है फीडबैक देना है। इट मीन कि इन दिस इनिशियल सब डोमेन्स में जो सुपरविजन है ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटर्स ऑफ द टीचर्स ये बहुत जरूरी है। So different keywords or the action word can be used for this subdomain, like we can use the attempt, copy, imitate, the mimic, follow, repeat, replicate, and reproduce। Examples objective हम किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि the learning will be, अब learner को ना this is that student जिनको आप as a teacher जो है उनको demonstrate करेंगे, so the learner will be able to copy a work of art, perform a skill while observing a demonstrator, and etc. The second subdomain of the Dare taxonomy is the manipulation, which means
the ability to perform certain tasks by memorizing or following some direction, some instruction. अब इसमें चूंकि पहले सब डोमेन में ड्यूरिंग द वाचिंग एंड ऑब्जर्वेशन वो अपनी जो कॉग्निटिव लेवल है वो बढ़ाएगा और बिल्डअप करेगा और उसी ही को यूज करके फिर इसको अब ये परफॉर्म करेगा, ये प्रैक्टिस करेगा. So the learner will just perform the skill or produces the product in a recognizable fashion by following general instruction rather than the observation. The action verb for the manipulation, that is the act, build, execute, perform, complete, accomplish, follow, play and produce. अब इन सब को अगर हम देखें तो उससे एक अंदाजा हो जाता है इसमें एक ऑर्डर्स मौजूद है. इसमें एक जो आप कह सकते हैं कि आप करो, build this one, execute this plan, complete this task, accomplish it, follow it according to the guideline, play it again, produce it. तो ये जो डिफरेंट है दे आर जस्ट इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्शंस है और वो इसके करेंगे. जो प्रीवियस वन में हम देखें इसमें वो क्या करता है कि वो कोई यहाँ पे वो डायरेक्शन नहीं है, कोई यहाँ पर इसे इंस्ट्रक्शन नहीं है. तो सिंपल जो कुछ वो देख लेता है, जो कुछ ऑब्जर्व करता है पर उसको कॉपी करने की कोशिश करता है. आप इनको देखिए, अटेम्प्ट, कॉपी, इमिटेट, मिमिक, फॉलो, रिपीट, डुप्लीकेट, रिप्लिकेट, रिप्रोड्यूस. इसमें मोस्टली जो करने को है he will do from yourself, he will try to learn it. It means there may be mistake, there will be no such instructions that will be against the guideline, but वो इसको करने की कोशिश करेगा. Examples क्या है? Perform a skill on one owns after taking, listen or reading about it, follow instruction to build a model. Precision, this is the third subdomain of the Indirect taxonomy. इसमें इस सबडोमेन में थोड़ी सी जो है एक्सपर्ट बिहेवियर आ जाती है. इसमें जो गलती करने की गुंजाइश है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. And this subdomain that involves the ability to perform certain tasks with some level of expertise and without help or intervention from the others. It means there will be less need of the supervision of the teachers in this third subdomain, while there is ultimate need of the supervision, appreciation, correction, and the initial two subdomain of the depth taxonomy. The learner independently perform the skill or produce the product because अब उसमें और थोड़ी सी पुख्तगी आ गई है, उसने उसको जिस तरह करना चाहिए उसी तरह कर सकता है. So he will just do that with accuracy, proportion, and exactness at an expert level. At this level, the performance become more exact and refined and errorless. And keywords that is achieve automatically, excel expertly, perform masterfully, demonstrate skillfully, and calibrate perfect. These are the things which make it from different from the other two, where there was not a perfection, when there was a lot of mistakes. Here there is no need of supervision, and the error will be also as less as compared to the initial two subdomains. Examples of objective, how we can construct them from this domain. The learner will be able to perform a skill, a task without assistance, without supervision, demonstrate a task to a beginner. He will teach other, he will demonstrate the task to the other one, work and rework something so it will be just right. Even we can say that if some students they are absent on a single day and the critical they have been completely expert at that demonstration, the next day when the students came, so these students they will be able to demonstrate the task to those who were absent yesterday. So this is actually they are at this level at the precision. This is the second last, the fourth one, articulation. It involves the ability to adopt and integrate multiple actions to develop method to meet varying and novel requirements. The learner modifies the skill,
are the product to fit new situations, combine more than one skill, and the sequence with the harmony and the consistency. यहाँ पर उनकी कंसिस्टेंसी आ जाती है, उनमें थोड़ी सी एडाप्टेशन आ जाती है, उसमें थोड़ी सी जो है वो इट मीन दे आर मोर देन द एक्सपर्ट और एंड दे कैन एट न्यू लेवल पे जो है उसको लेके जा सकते हैं। आर्टिकुलेशन के लिए जो वर्ब वी कैन से दीज आर द अडॉप्ट, कंस्ट्रक्ट, कंबाइन, क्रिएट, कस्टमाइज, मॉडिफाई, फॉर्मुलेट, अल्टर एंड ओरिजिनेट। यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें थोड़ी सी वो क्रिएटिविटी भी डाल सकता है, उसमें वो उसको एक और अंदाज से विच मे बी बेटर देन द प्रीवियस वन कर सकता है। इट मीन he has now mastered at the previous instruction according to the previous instruction, but now against those instruction, it means with some changes he can do it in a better way. This is actually the articulation. Even if there is maybe integrate, it means he had to combine different tasks and then had to come to act as a single act. Examples of the adjectives from such in this domain there would be like combine a series of skills to produce a video that involves music, drama, color, sound, etc. Combine a series of skill activities to meet a novel requirement. The last one, which means then ये एक उसकी एक आदत बन जाती है, आदत मीन ये वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि now he can do it automatically. वो उसमें जो है उसकी एक एक्सपर्ट इतना हो जाता है कि he can do dual task with that particular skill. It means जैसे वो इसमें हो जाए कि इसकी उसकी एक रूटीन ड्यूटी हो जाती है. Naturalization is the ability to perform action in automatic, intuitive and unconscious way. It means he can talk to you, but he will perform the act very skillfully without any error. He can even without looking to their hands, they can do it with जितने भी मुख्तलिफ शोबों में जो मास्टर होते हैं, जो प्रैक्टिकल्स जो टीचर्स होते हैं, even they don't look at their hands and they can do it with their hand. It means उनकी वो इतने जो एडाप्टेशन हो चुकी होती है कि now that has been a natural thing for them. उनके हाथ ऑटोमेटिकली वो काम करते हैं because of the too much repetition, because of the too much practicing. The learner accomplishes one or more skill with ease and makes the skill automatic with limited physical or mental exertion. At this level, the performance has become second nature or natural without needing to think much about it. Like the keywords for that is the create, design, develop, invent, manage, naturally are perfectly. It means now ये जो है क्रिएटर बन जाता है, इन्वेंटर बन जाता है इस लेवल पर। वो नए नए डिजाइन जो है बनाता है, नए नए आइडियाज दे देता है और ये एक जो है एक मास्टर एक एक्सपर्ट बंदा ही कर सकता है। Examples for such like will be the learner will be able to maneuver a car into a tight parallel parking spot, operate a computer quickly and accurately, display confidence while playing the piano. अब ऐसे एग्जाम्पल जो जिसमें you don't have to think too much, which you become natural and which is being used to have so much adopt with that skill that even it just occur automatically without even thinking about, like for example playing basketball for the Michael Jordan and hitting that cover drive for the Baba Azam. Whenever he is just got that accurate ball for the cover drive, every time he will drive it accurately. Even he don't need such thinking about that, but it happened automatically. This is the naturalization of some skill. बट नेचुरलाइजेशन जो है ये उसमें आती है कि व्हेन यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है दिन इवन जब भी वो सिचुएशन और रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, द स्किल जो है खुद बहुत हो जाती है। जितने भी साइकोमेटर की जो दो डोमेन्स को हम कंबाइन करते हैं, so we can divide these all these subdomains into four domain. This is the P1, P2, P3 और P4। तो P यहाँ पर जो मुराद साइकोमोटर है, जिस तरह के पहले हमने सेशन में हमने C1, C2, C3, C4 का कहा था कि डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल्स होते हैं सब डोमेन जो हम C विच मीन द कॉग्निटिव, उस इस तरह ये भी है
जिसमें P1 जो है दिस इज द बेसिक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिसमें ऑब्जर्वेशन है, इमिटेशन है, प्रैक्टिसिंग है, जस्ट आफ्टर द वाचिंग एंड एग्जैक्टली व्हाट द टीचर हैव डन, उसी तरह जो है आप प्रैक्टिस करना है। P2 and P3, this is just practicing both in the, we can say that P2 is practicing in control environment and P3 जो है थोड़ा सा ये without supervision है, P2 with supervision है, डायरेक्ट सुपरविजन है एंड इनडायरेक्ट सुपरविजन के हम कह सकते हैं। P4 जो है ये थोड़ा सा देयर विल बी नो नीड ऑफ सुपरविजन, दे विल बी रियल लाइफ एनवायरनमेंट होगा। इसके अलावा जो है उसमें ऑटोमेशन आ जाती है, उसमें जो है कोई सुपरविजन नहीं होगी, तो ये फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज द P1 psychomotor domain. The person in the light blue shirt, he want to learn how to throw the arrow. तो वो पहले क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा कि किस तरह जो है दैट थ्रेड ऑफ द बो जो है उसको खींचना है, और व्हाट विल बी द बायोमैकेनिक्स ऑफ द बोथ हैंड्स, द हैंड व्हिच इज होल्डिंग द बो, द हैंड व्हिच इज जस्ट पुटिंग दैट थ्रेड। अब ये देखिए इसमें कोई तीर नहीं है, अगर आप इसमें देखिए तीर जो है ये उसके पास है, जो बंदा वहां पर सीखने की कोशिश कर रहा है तीर उसके पास है। देयर इज नो arrow in this book. It means we have to divide inactivity into different component, and we have to make the student practice in that single component. After that, in the later stages, then they will combine all these steps to make a single activity. क्योंकि एक एक को अगर हम इस तरह डिस्क्रीट स्टेप में डिवाइड करते हैं तो इसको सीख के कंबाइन, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस तरह डायरेक्ट एक मिनट की एक्टिविटी कर लेते हैं और उसके बाद जो रिपीटेड, so that will be very difficult for them to learn. इसलिए the best way to demonstrate a practical skill to your students is initially divide that demonstration into discrete component, and after that let them practice that component wise, and after that when they have completely expert with that single component, then teach them and demonstrate them in a combined way, and then let them to practice in a combined way at this level, at this procedure. They will become, even they will know what are the different components, and they will know about the error which might be in a single component of that complete activity. So this is just the psychometric domain one. When there is observation they will be, अब ये बंदा जो है खुद जो है वो लेके खींच रहा है लेकिन वो गलती कर रहा था, तो इसने इससे शायद लिया होगा कि भाई इस तरह नहीं, इसको इस तरह करना है, आपका हाथ जो है सीधा होना चाहिए, आपका जो जिस थ्रेड को खींच रहा है वो हाथ, वो भी आपका जो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और जितना आप दूर खींचोगे और आपके हाथ से उतनी ही यानी मुख्तलिफ जो है उसकी एक एक इंस्ट्रक्शन आप उसको देके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जो है फिर ये एक्चुअली दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, जो हमने डेव टैक्सोनॉमी में डिस्कस की थी, that was the imitation and manipulation, the dev taxonomy, as well as this is the guided response, as well as the sit and guided response in the Simpson taxonomy, which is actually we call as the P1. अगर हम P2 पे चले जाएं, वहां पर फिर क्या है, the teacher again is still there, ये डायरेक्ट सुपरविजन है। अब वो देख रहा है कि किस तरह जो है, अब आप अगर देखिए इसमें जो फर्स्ट इमेज में जिसमें देयर इज डायरेक्ट सुपरविजन, यहाँ पर उसकी हैंड को देखे किस तरह है, और फिर नेक्स्ट में देखे, इट मीन देयर इज क्वाइट चेंज इन द एक्टिविटी, ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग the critical skill, how he is doing, how he is throwing that arrow from the bow, and then if he is in a mistake, he will correct them again, just like here in this situation. He will repeat, he will practice it again and again and again and again until he just learn it completely, how to hold the bow, how to pull that thread, and how to throw that arrow. Then at the domain 3, which is the P3, it means that will be now indirect supervision, and there will be control environment.
So as we have talked in the previous one that the P2 and P3, there will be supervision, and the one there will be direct, the other will be indirect. So that was the direct supervision. Direct supervision means the supervisor, the demonstrator, the teacher, the therapist, he is standing at the site of practice और वो उसकी गलती को चेक करता है, उसकी गलती को ठीक करने की कोशिश करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, उसको जो है इंकरेज करता है। एंड इनडायरेक्ट मीन द सपोज वहां पर कैमरा लगा हुआ है और उसके जरिए उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी वीडियो हो रही है, या उसकी जो है एक किसी और बंदे की उसकी कहने की भाई हाउ आपने वो किस तरह निशाना बनाया था। तो ये डिफरेंट जो है द थेरापिस्ट द सुपरवाइजर ही विल बी नॉट विल प्रेजेंट हियर। अच्छा, ये प्रैक्टिकल स्किल हमारे क्लास लेवल पर किस तरह होते हैं? व्हेन यू हैव टू डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, 5-6 कंपोनेंट्स में ग्रुप में आप डिवाइड करते हैं। तो P2 में आई यू हैव टू बी देयर विद द स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट में आप दूसरी ग्रुप में चले जाते हैं, सो दे विल प्रैक्टिस इट, दिस इज नाउ दे विल नाउ एंटर इनटू द P3। इट मीन अगेन दे विल आस्क देम हाउ यू आपने किस तरह किया, या जो मॉडल है उससे कहें पूछेंगे कि भाई किस तरह जो है उन्होंने ये प्रैक्टिकल स्किल किया। तो ये जो है कंट्रोल एनवायरनमेंट में स्टिल देयर इज नो हरी, देयर इज नो पेशेंट, देयर इज नॉट एन हॉस्पिटल, देयर इज जस्ट मॉडल पर करेंगे। इट मीन कंट्रोल एनवायरनमेंट हो, कंट्रोल एनवायरनमेंट मीन कि जब डेमोस्ट्रेशन होगी तो मॉडल पर करेंगे, कोई रियल पेशेंट नहीं है, डेमो जो है वो एक डमी पेशेंट होगा, वो जो डेमो वहां पर देंगे और उस पर गलती भी होगी तो डजेंट मैटर। जैसे आप इस बंदे को देख रहे हैं, ही इज प्रैक्टिसिंग इनसाइड अ हॉल, अब वो जो है तो सुबह शाम इसी को जो है प्रैक्टिस कर रहा है। एंड इफ यू लुक एट हिज स्किल, ये जो उन्होंने बो पकड़ा हुआ है और इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, that has been much improved from this picture. If you look at this, how he is holding and uh, pulling that thread, then this picture is much better than this one, and then इन दोनों से ज्यादा बेहतर जो है, this is that situation when he is in a more better way. The before, when he just come into the real life environment, there is, it means there is war, there is fight between two different groups, and वहां पर क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसको टारगेट स्टेबल है, वो टारगेट को एम कर रहा है और उसको जो है ही हैव इनफ टाइम टू थ्रो दैट एरो टुवर्ड्स द टारगेट। बट इन द रियल लाइफ में वहां पर कहीं से भी दुश्मन जो आ सकता है, कहीं से भी जो अपोजिट पार्टी का बंदा है वो आ सकता है। सो ही हैव टू हिट इन एनी डायरेक्शन, इन मल्टीपल डायरेक्शन विदाउट एनी इनफ टाइम फॉर थिंकिंग। तो P4 में ये तब एंटर हो सकता है when he have mastery and the control environment। इसलिए आप एक स्टूडेंट है, उसको आप कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डेमोन्स्ट्रेशन जो है उसको सिखा रहे हैं, एंड डायरेक्टली आप उसको पेशेंट के साथ लेके उसको डायरेक्ट पेशेंट पर सिखा रहे हैं, सो दैट इज दैट द एक्चुअली द प्रॉपर वे। पहले तो आप उसकी कॉग्निटिव और डिस्कस ऑलरेडी उसकी डेवलप करनी है, एंड द कॉग्निटिव डोमेन। फिर उसके practical to practical, there should be in a controlled environment, there should be a dummy patient, there should be a model, there should be simulation, or after that when they have errorless, when they are perfect and the expert at doing that activity, फिर जाके जो है उनको आप पेशेंट पर ले कह सकते हैं। सो इट मीन दे विल हैव द कॉन्फिडेंस टू डील विद द पेशेंट, there will be no such big issue for the patient, they will not in any danger। So that is then uh, the practice in the real life, the practice in the hospital, in the clinical setup, and they have to demonstrate their activity on the real life patient। So just like in this example, if we look at again to the initial one, he was just observing that how to just एक एक कंपोनेंट सीख रहा था तीरंदाजी का, फिर ये जो है प्रैक्टिस कर रहा था, फिर ये खुद जो है उस प्रैक्टिस कर रहा था विद डायरेक्ट सुपरविजन, फिर ये सुबह शाम खुद को मास्टर कर रहा था। फिर जब ये मास्टर हो जाता है तो जस्ट लुक एट हिज एम एंड हिज वे अप बैक pulling the thread of the bow। So that was all about some P1, P2, P3 practical skills. Now, if we have another demonstration, we can say that if there is, suppose, a patient of the
different and पहला P क्या होगा कि he will just assess the lumbar spine low back pain का patient है assess the lumbar spine perform different diagnostic tests under the supervision high stress level होगा उनका और उनका जो है high stress level mean क्योंकि उनको अभी तक he or she don't know that what are the different tests which can be used in the differential diagnosis of the low back pain तो लेकिन वो just observe करेगा और इसको assessment की जरूरत होगी from the teacher. This is actually we call as the imitation. In the second, he or she will perform on the demi patient the lumbar spine assessment independently, but cannot perform that the march test etc. and call for the help that how we can conduct this march test on the patient with low back pain. That we can call as the control. The last, which we can call, he has performed all kind of assessment tests independently. He is now an expert and he can teach others and he know everything about that situation. So that is actually the automation. These are the three short level which we can call as the sub level of the psychomotor domain. Now there is we can say that this is a situation. The patient is not a real patient, is a dummy patient, and they are going to, as nursing students, they are going to check the blood pressure of that dummy patient, while at the same time, the teacher is just looking at them through a camera. So this is the psychomotor domain. And what is the level? That level is the P3, which is the indirect supervision. There is a control environment. This is not the real life experience, but there is supervision. So this is the P3. As we अगर हम पीछे जाए और देखें तो हमने जिस तरह ये कहा था कि P3 है कि जिसमें से इनडायरेक्ट सुपरविजन होगी और कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा. सो यहाँ पर इस पिक्चर में भी ऐसा कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड एक दूसरे कमरे में बैठ के जो है उसको वीडियो की जरिए स्क्रीन पर देख रहा है कि वो किस तरह कर रहे हैं. नाउ द this supervisor teacher, this doctor is not present exactly at the side of practice. So that was our affective domain. Inshallah, in the next session, we are going to discuss the Bloom taxonomy of affective domain. In the last session, we will discuss the Bloom taxonomy of affective domain, as well as we will discuss the other objectives of the lecture, which is about how to construct the objective, what is the anatomy of the objective, what are the different components of the learning objective, and how we can construct the objectives for our students during our lecture. That will depend on which working on which domain we are working on the cognitive domain, we are working on that affective domain, or we are working on the psychomotor domain. So that was all about the different sub domains of the psychomotor level. I have to summarize them a little bit. Quick summarization of the psychomotor domain. So we were discussing in the initial sessions, we talk about in detail about the cognitive domain. Then we discuss in detail in this session about the psychomotor domain. Second, taxonomy. In the initial, the previous session, we discussed the psychomotor domain in the Simpson taxonomy, in which we discussed the perception, the sign, the guided response mechanism, the complex motor response, the adaptation, the origination. And then we discussed the detail as well as the different action verb for each sub-level of the Simpson taxonomy. We also discussed about some history of the Simpson, who was the Simpson, that Elizabeth J. Simpson, she just conduct and she just construct all this work which is based on the work of the all as well as the Bloom. Then we discussed the different subdomains of the Debs taxonomy in this session. There were the imitation, manipulation, the precision, the articulation, and the
naturalization. So that was all about today's session. Hope you all will have enjoyed and hope you all will have understand that what we mean by the psychomotor domain and what we mean from the uh, psychomotor domain depth taxonomy and what we mean from the Simpson taxonomy. What is the basic difference between their subdomain? What are the similarities and how we can just summarize and concise these domains into these simple. And we also discussed that how we can use this psychodomain, psychomotor domain different steps in our classroom, how we can use them in our demonstration room, how it can help our students to learn the practical skills, to learn the demonstration, the assessment, different methods in a very simple way, in a very effective way, and that will not also will make our image clear, but it will also save a lot of time uh, for both of us as well as for the students. Thank you so much to all of you. Have a nice day. Have a nice day.